हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंट्रोडक्शन टू वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोलर थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सोलर एनर्जी इज़ अ क्लीन, चीप एंड एबिडेंटली अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी है। और जो टोटल रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज द वास्ट, आउट ऑफ विच only small fraction gets incident on the outside of the Earth's atmosphere, and 30% of it is directly reflected back to the outer space in the short wave radiation, and 47% is directly converted to heat, that is the loss due to the outer space in the long wave radiation, and the major portion of the rest is 23% causes evaporation, precipitation and circulation of the water in the hydrologic cycle of the earth. Two-thirds of the solar energy falling on the whole earth land surface fall on the northern hemisphere and one-third of the southern hemisphere. What is the historical perspective? The first effort in exploiting solar energy for agriculture purpose is reported to be of 5000 BC, and the first applications to be concentrate solar rays by means of reflectors is reported in the way back to 200 BC. आगे बात करते हैं why is utilization is still neglected. तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन बात करते हैं सोलर एनर्जी की, रिमेन्स स्टिल नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द लो एंड इरेगुलर सोलर पावर डेंसिटी, हाई इंस्टॉलेशंस एंड द जर्मिनेशन कॉज्ड बाय सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जिसको हम बोलते हैं SPV पैनल्स, एंड सोलर थर्मल पावर प्लांट्स. ऑल्दो द सोलर photovoltaic technology enables the conversion of sunlight into electricity in an environmentally clean manner. What is the SPV system? बात करते हैं SPV सिस्टम की. तो SPV systems have emerged as powerful sources for applications including lighting, water pumping, telecommunications and power plants. Reports received from state implementing agencies indicates that recently about 13,000 home lighting system, 32,000 solar lanterns and 1200 street lighting systems have been installed. And further, SPV पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया. SPV पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया की बात करते हैं तो रिसेंटली इन द मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स canvassed the scheme of supplement grid power by installing SPV power projects in the range of 25 to 100 kilowatt for rooftop system on the public buildings to demonstrate peak loads saving applications in major urban areas and for the transmission and distribution support system in remote rural areas. Under this scheme, MNES, a subsidiary of the two-thirds of the total project cost, have been provided the State Electricity Board SEB. आगे बात करते हैं हम लोग. तो for encouraging SPV system, the World Bank has initiated a program of financial allocations in the developing countries. Some $15 million is likely to be allocated for the Indian project for SPV market expansion for meeting the energy needs. नेक्स्ट आगे जो हम लोग बात करते हैं तो कि वेयर इज़ द SPV सिस्टम सक्सेसफुल, वेयर आर द SPV systems are the success.